Hello and welcome to today's online class for class 11th. Today we are going to discuss chapter number 9, that is theory of supply. As you have done chapter demand. Demand means what a consumer wants to buy, what a consumer wants to purchase, what a consumer is ready to buy at a given price in a market at a given period of time. Same way, theory of supply is exactly parallel to the theory of demand. Like we have individuals demand, market demand, law of demand, changes in demand, as well as quantity demanded, elasticity of demand. Same way we have theory of supply. Only difference is that demand is from side of consumer, but supply is from side of a firm or a producer. So here its supply means a seller, a firm or a producer. We take it in a similar way till this level. In 11th micro we take seller, firm, producer is the same way, right? Otherwise they are the different one, can be the different one also. So theory of supply states कि supply is amount of commodity. A commodity means one commodity. Micro च हमेशा असी एक commodity ही market ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, that a seller or a firm is willing to sell, कि वो खरीद बेचना चाहता है in a market at a given price in a given period of time. So supply ਉਹ amount है एक commodity ਦੀ ਜਿਹੜਾ seller और firm ready to sell है market ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ time period ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ sell ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. So market is there, price is given as well as time period is also given. So it is the willingness or the desired quantity ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ seller ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. So from this definition we get it कि there are certain features of supply. पहली चीज़, it is a desired quantity. Desired क्यों? क्योंकि willing है sell करने वास्ते. दूसरी चीज़, it is always expressed with respect to price, कि कीमत दे नाल है. जितना एक कंज्यूमर बाय करना चाहता है उसी तरह दिती हुई कीमत दे एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है. So it is with respect to price. Next, it is with reference to period of time, कि time period भी given है किस time ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है. That is what is called a supply. So supply is amount of a good that would be offered for sale at different possible prices at any instant time or any period of time. A period of time can be day, can be week, can be hourly, can be monthly. So that is what supply is. So desired quantity, what is willing to sell. It is related to price, with reference to price. कीमत होएगी ਤਾਂ ਹੀ supply ਚ change ਆਏਗੀ. So ਇਸ ਲਈ supply is a flow variable, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ with reference to period of time ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ time period mention ਹੁੰਦਾ that is known as a flow variable, क्योंकि it can be per day, per week, per month, per month of the year, per year also, right? Supply and stock are two different concept, but ये दोनों ही एक producers ਦਾ point of view है कि supply की है ते stock की है. Stock ਉਹ total quantity है commodity ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਲ ਹੈ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਕਸਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਟ ਹੀ ਕੈਨ ਸੈਲ. ਬਟ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੈ कि अगर यह प्राइस आएगी तो आई विल ऑफर फॉर सेल. और ये जी क्वांटिटी है ये विद रेफरेंस टू प्राइस चेंज हो जाती है, जबकि स्टॉक चेंज नहीं होता.
स्टॉक चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक वो इन्वेंटरीज है जिन्हों एक प्रोड्यूसर्स रखता है अपने कोल, ताकि जदों भी कभी अनएक्सपैक्टेड फ्लक्चुएशनस आन, अनएक्सपैक्टेड टाइम पीरियड आए, कैन बी इन द प्राइस और उहदे आउटपुट दे विच, ते ओ स्टॉक दे विचों ओ अपनी सप्लाई नूं विदहेल्ड या उन्होंने यूज़ कर सके, ताकि उहदियां सेल्स अफेक्टेड ना हो। इमीजिएटली अगर किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट हो गई, मार्केट दे विच वो ज़्यादा सैल करने की लोड़ है, तो फर्म वो स्टॉक चो कट के उन्होंने सैल कर सकती है। या सपोज उसका आउटपुट डिक्लाइन कर गया तो वो मार्केट सैल नहीं कर पा रहा, तो वो अपने स्टॉक दे विच उन्होंने सैल कर सकता है। सो स्टॉक एंड सप्लाई का की डिफरेंस है। सप्लाई वो क्वांटिटी है जिहड़ा एक प्रोड्यूसर विलिंग है सैल करन नूं, ऑफर फॉर सेल विद अ चेंज इन प्राइस। बट स्टॉक एक फिक्स क्वांटिटी है जिहड़ा सप्लाई नूं मेनटेन करने वास्ते यूज़ करता है। सप्लाई इज ऑलवेज रेफर्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम which changes with the period of time according to the change in price. So it is a flow concept. Whereas जेड़ा stock है वो time period नू relate नहीं करता, so it is measured at a point of time कि इस वेले इस producer कोलों इस commodity दा कितना stock हैगा, ताकि वो market दे जिहड़ियां fluctuations है उन्होंने bear कर सकता है। So stock is referred with particular period of time, so it is referred as a stock concept। जे period of time होएगा तो वो flow है, जे point of या particular time होएगा तो वो stock होएगा। so supply ओदी desired supply है because willingness है, लेकिन stock ओदी actual supply है what he can supply at in the market whenever there is a time। लेकिन supply तो ही stock जी सप्लाई है स्टॉक तो ही क्रिएट हो सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है विद द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। नाउ लेट्स डिस्कस इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। बट बिफोर इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, आई जस्ट वांट टू टेल यू सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड डिफरेंस। Supply and quantity supplied means when we talk about supply of a good, supply of a commodity by a firm or all the firms, अगर ते different prices थे, different possible prices थे, जिहड़ा producer is ready to sell or their firms are ready to sell in a market, that is called a supply, right? But किसी एक specific price ते जो specific quantity sell की जाती है, that is known as quantity supplied। so supply का मतलब total set of all the quantities किसी भी एक commodity दियां जिहड़ियां सेल वास्ते ऑफर कीतियां जांदियां ने at different possible prices in a period of time in a market, that is known as a supply। but एक specific quantity किसी भी quantity दी जिहड़ी सेल ਲਈ ऑफर कीती जाती है at a certain price at a specific price, that is known as quantity supplied, right? so that is the difference between quantity supplied। so these are the different quantities supplied at different prices। now individual and market supply। individual and market supply ਦੇ ਵਿੱਚ there is only one difference। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ in a market in a specific period of time, that is known as individual supply। फर्म वन है, कमोडिटी एक है, माइक्रो च हमेशा कमोडिटी वन रहिंदी है, कभी भी दो या तीन कमोडिटीज नहीं होंदियां। इट्स ऑलवेज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, चाहे इंडिविजुअल है चाहे मार्केट है, कमोडिटी शुड बी सिंगल। अगर एक फर्म विलिंग टू प्रोड्यूस ते सैल करने नूं तैयार है पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो इंडिविजुअल सप्लाई है। लेकिन अगर उसे कमोडिटी दियां सारिया फर्म्स डिफरेंट गिवन प्राइसिस दे उत्ते मार्केट दे अंदर
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਆਫਰ ਫॉर ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, that is known as market supply. Market supply ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ that is industrial supply. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਸਪਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਰਮ that is A, ਫਰਮ A is ready to sell, अगर प्राइस 10 है तो 100 यूनिट सेल करेगी, और अगर प्राइस राइज करके 50 हो जाती है तो वो 500 सेल करेगी। ठीक है, सेम वे देयर इज अ मार्केट सप्लाई। मार्केट दे विच असी सपोज कीता, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल स्कैड्यूल है, हाइपोथेटिकल स्कैड्यूल दे विच वी कैन सपोज 2 फर्म्स ने, 3 ने, 4 ने, असी किसी नाल भी बना सकते हैं। सो असी सपोज कीता देयर आर ओनली 2 सेलर्स A and B, price is same, that is 10, 20, 30, 40, 50 prices rise कर रही ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ A ਹੈ, ਉਹ 10 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, whereas B ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਲਿੰਗ ਓਨਲੀ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਸੈਲ ਓਨਲੀ 50 ਯੂਨਿਟਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰਮਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਹੋਏ, 150। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਹੋਏ, 300, ਔਰ 50 ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 800। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪਲਾਈ। 500 plus 300 is equal to 800. That is what is market supply. ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਮ A ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰਮ A plus B ਦਾ ਹੈ, one thing is very sure ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 50 to 10 ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਵੀ 500 to 100 ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। That means supply and price both are moving in the same direction. That means price ਤੇ supply ਦਾ आपस relationship ਕੀ ਹੈ, positive। अगर price increase कर रही है तो firm A ਦੀ sale भी increase कर रही है, firm B ਦੀ sale भी increase कर रही है। लेकिन demand ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ price ਤੇ demand ਦਾ relation आपस ਕੀ ਹੈ, negative, opposite, inverse। प्राइस increase ਹੁੰਦੀ ਹੈ, demand decrease ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन सप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸੈਲ ਮੋਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਫਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ आपस रिलेशनशिप की है, पॉजिटिव। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। अगर प्राइस फॉल करती है तो सप्लाई भी फॉल करती है। लेकिन हर फॉर्म का ये इंक्रीज करने का रेट फर्क हो सकता है। लाइक ये 100 200 इको पेस से चल रही है, ये 50 100 150 200 300। सो इनक्रीज का रेट फर्क हो सकता है, बट दोनों दे विच एक जिहड़ा लॉजिक सानू क्लियर नज़र आ रहा है कि प्राइस ते सप्लाई दा रिलेशनशिप आपस की है, पॉजिटिव, डायरेक्ट। इसे करके प्राइस ते सप्लाई दी जिहड़ी लाइन रिलेशन पॉजिटिव होने करके सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, सप्लाई कर्व स्लोप्स upward, which shows a positive relation between price and supply of a commodity which is offered for sale, क्योंकि this is increasing from left to right और it is upward sloping कि अगर कीमत वध गई सप्लाई भी वध गई।
अगर कीमत घट गई सप्लाई भी घट गई. सो प्राइस एंड सप्लाई हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, चाहे वो एक इंडिविजुअल फर्म है चाहे वो मार्केट सप्लाई है, विच इज अ सम टोटल ऑफ all individual firms, which is opposite to what was the relation between price and demand. वो relation negative सी, demand curve negatively sloped होंदी है, supply curve positively sloped होंदी है, क्योंकि price से supply the relation आपस की है positive, चाहे वो एक firm दा चाहे वो सारिया firms दा. So that relationship exists for individual supply as well as market supply. Individual supply means supply of a commodity, quantity offered for sale by a firm, single firm at particular price during a specified period of time. But market supply means quantity of a commodity by all the firms willing and produced to sell in a market at a particular price during a specified period of time. So this was all about the chapter, introduction of chapter supply. Rest we will continue in the next class.